here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 The next recipe that I'm sharing with you is chicken rolls. सारे लोग बनाते हैं. मेरा ये तरीका है कि इसमें वेजीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, चिकन ज़्यादा होता है और नूडल्स कम होते हैं. नूडल्स बहुत थोड़े डालती हूँ. तो वो बस वही वेजीज़ इसमें कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज, ये 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं. और कैप्सिकम बिल्कुल एंड पे डालते हैं, उसको ज़्यादा पकाते नहीं हैं वरना सालन का टेस्ट आ जाता है. बस इसको रोल की शेप दे दी है. स्पाइसेस ऐड किए हैं. कनौर का क्यूब ज़रूर ऐड किया करें, वो बहुत इन्हांस करता है फ्लेवर. द नेक्स्ट रेसिपी इज़ कीमा समोसी. उसमें कीमे को मैंने लहसुन डाल के बॉईल करके उसकी स्मेल ख़त्म कर ली है. उसके बाद प्याज को चॉप करके जो कीमा तैयार था वो डाला है. हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा डलती हैं, नमक, मिर्च, लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर और जो है धनिया. बस दिस इज़ द नेक्स्ट रेसिपी इज़ पनीर का समोसी. इसमें यह है कि पनीर को बनाना आता है. मोस्ट ऑफ़ द पीपल नो हाउ टू मेक पनीर एट होम. जिनको नहीं आता उनको मैं बता दूं, दूध को फाड़ लेते हैं किसी भी चीज़ से. लोग लेमन से भी कर लेते हैं, मैं फटकरी से करती हूँ. जब बॉयल आ रहा होता है ना, दूध को फटकरी डाल दें, दूध का पानी अलग हो जाएगा. आपको समझ आ जाएगी कि पनीर रेडी हो रही है. बस आप उसको स्टेन कर लेंगे. एंड पनीर को जब रूम टेम्परेचर पे होगा तो धनिया, हरी मिर्चें डालें, नमक, मिर्च डालें. और जो है हरी मिर्च का एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसमें. बस वो फिर अच्छे सा मिक्स करें. बस शेप दे लें आप समोसे की एंड आपकी चीज़ें रेडी हैं.